ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि you have to tell us that this process is allowed or not, or you have to tell this process is allowed through weak interaction, through strong interaction, or through electromagnetic interaction, then you should firstly remember that in weak interaction, the isospin, the strangeness, and the third component of isospin, all three are not conserved, and it involves the leptons. Okay. And in electromagnetic interaction, the strangeness and the third component of isospin is conserved, but delta I is not conserved. But in strong interaction, whenever a process will take place through strong interaction, the delta I, delta I3 and delta S all through should be conserved. And obviously the basic term charge, energy, momentum, baryon number, lepton number, this should be conserved. So now let us check that this reaction is conserved or not. So firstly we have checked that charge is conserved or not. So yes, charge is conserved. So we will say charge is conserved. Now lepton number, out of all these, nothing is lepton, कोई भी इसमें से lepton नहीं है, तो लेप्टोन नहीं है तो लेप्टोन नंबर भी यहाँ पर कंजर्व हो रहा है। यहाँ से एक बात तो क्लियर हुई कि कोई भी लेप्टोन नहीं है तो ये इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शन तो नहीं हो सकती, बिकॉज वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स द लेप्टोन्स। ओके, एंड ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गई क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लेप्टोन्स नहीं होते हैं। ओके, बैरियन नंबर में देखें तो हमें पता है प्रोटॉन हमारे पास एक बैरियन होता है और हमारे पास सिग्मा भी एक बैरियन होता है, तो उनके लिए +1 रहा, जबकि के और पाई मिजोन है, तो बैरियन नंबर भी मेरे पास कंजर्व आ गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइसोस्पिन। आइसोस्पिन अगर हम देखें तो पाई की 1 है, प्रोटॉन की हाफ, और यहाँ पर भी सिग्मा की 1 और कायोन की हाफ, तो आइसोस्पिन भी हमारे पास कंजर्व हो रही है। आइसोस्पिन हमने स्ट्रेंज इंटरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में इंट्रोड्यूस की थी ताकि हम देख सके जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विच हैव द सेम मास, हाउ टू डिफर देम अलोंग द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर चार्ज इंडिपेंडेंट, सो वी इंट्रोड्यूस द आइसोस्पिन क्वांटम नंबर in order to distinguish them between each other in the strong interaction. Now I3 की बात करते हैं। I3 is the third component of isospin, because in electromagnetic interaction we need the I3 because we want to distinguish them like neutron and proton. So for proton we give the third component of isospin as +half, and for neutron it is -half. So whenever we apply the conservation of I3, so it is also getting conserved, so I3 is also conserved. Now strangeness. Strange particles are those particles which are formed from strong interaction but decay through weak interaction. So we introduce the strangeness quantum number. So here only the sigma having the strangeness -1 and K meson have the strangeness of +1. So that's why the strangeness is also conserved. It means the delta I, delta I3 and delta S all are conserved. So this reaction will take place through the strong interaction. So it means this process is allowed through the strong interaction. So this is the main process to do these type of question.